Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all will be fine. You all will be safe and sound, and you all will be doing your studies at home with proper attention. So on behalf of Behriya Foundation College Chakwal, I am teacher Rabiea SN. The topic for our discussion is metals and their properties from the chapter number 3 of your fact file 3. Okay, we are going to start our new chapter. The chapter is about metals. So first of all we are going to learn about a metal. What is a metal? एक metal क्या होता है? So according to the definition, a solid material which is typically hard, shiny, malleable and ductile with good electrical and thermal conductivity is a metal. अगर कोई एक ऐसी चीज है जो आपको सॉलिड भी मिल रही है, ठीक है, वो हार्ड भी है, उसमें थोड़ी शाइन भी है, वो मेलेबल और डक्टाइल है, एंड इट इज अ गुड कंडक्टर, सो यू कैन से दैट इट इज अ मेटल. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट metals that we are using in our daily life. You can see in the picture there are variety of metals that are being used in our home. Okay, so before moving to the properties, we are just going to highlight these properties. The first one is metals are dense. Second, metals are malleable and ductile. Third, metals are conductors. And the fourth, last but not the least, metals can form alloys. We are going to discuss each of them one by one in detail with their proper elaboration with their pictures. Okay, so first of all, the first property is metals are dense. The question arises, what do you mean by dense, or how could you say that an object is a dense object? ठीक है, आप कैसे कह सकते हो कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डेंस है? तो सबसे पहले dense means having more mass in a less volume. अगर कोई चीज बहुत थोड़े वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा mass कवर कर रहा है, you would say that material is dense. ठीक है, they have hard solid structure. For example, gold and copper. You can see these are the two basic metals that are very common in our daily life. So according to the picture, you can see that the particles in the metals आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर. ठीक है, ये जितने भी पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं ये प्रॉपरली अरेंज हुए हुए हैं, और इनके अरेंज होने की वजह से क्या हुआ कि इन्होंने थोड़े एरिया में खुद को ज्यादा कवर कर लिया है. ठीक है, तो थोड़े एरिया में इनका ज्यादा मैस आ रहा है. इट मीन्स कि मेटल्स जो हैं वो डेंस हैं. ओके, जस्ट लाइक जैसे आप एक अपने घर में कैबिनेट लेते हो या कबर्ड लेते हो, तो उसमें बजाय इसके कि आप सारे कपड़े ऐसे ही घुसा दो तो थोड़े कपड़े आएंगे, लेकिन अगर आप उन कपड़ों को प्रॉपरली फोल्ड करके प्रॉपर एक अरेंजमेंट के साथ रखो तो थोड़े स्पेस में ज्यादा कपड़े आ सकते हैं. तो सिमिलरली इन दिस पिक्चर द पार्टिकल्स आर प्रॉपरली अरेंज, सो दे कैन कवर मोर लेस वॉल्यूम विद मोर mass. Okay, so metals are dense, and the best example for the dense metals are copper and gold. Okay, so second property is metals are malleable and ductile. The two terms are totally new to you people. First one is malleable and the second one is ductile. Okay, the first term is malleable. Malleable means can be made into sheets. For example, aluminium foil. You people are very familiar of aluminium foil that are being used in our kitchens to wrap the food. वो सिल्वर कलर की जो शीट होती है जो हम खाना रैप करने के लिए यूज करते हैं, that is basically aluminium foil, and aluminium is a metal. ठीक है, और एल्यूमिनियम मेटल से डिफरेंट शीट्स निकाली जाती हैं. अगर किसी मेटल में से मेटल को यूज करके आप उस मेटल की शीट्स बना रहे हो, सो दिस प्रॉपर्टी इज मेलेबिलिटी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स कैन बी मेड इनटू वायर्स. किसी को वायर्स की फॉर्म में निकालना, मोल्ड करना. ठीक है, उसे हम कहते हैं कि वो मेटल डक्टाइल है. फॉर एग्जांपल कॉपर वायर्स. ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल केबल्स में वायर्स यूज हो रही हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ डक्टिबिलिटी. ओके, here is the picture that explains why metals are malleable. So on the left hand side you can see the particles that are properly arranged in layers, and when a force is applied on these layers, in the right side of the picture you can see these layers slip pass over one another. जब इन layers को आप force लगाते हो तो ये layers बिल्कुल एक दूसरे से slip हो जाती हैं, और जब ये layers slip होती हैं तो ये बहुत थिन शीट्स की फॉर्म में आ जाती हैं. इट मीन्स कि जितने भी मेटल्स होंगे, बिकॉज ऑल ऑफ द मेटल्स हैव प्रॉपर
properly arranged particles, so all of the metals would be malleable. Okay, metals are ductile. Here you can see different metals can be pulled into long thin wires that can be further used for their respective purpose. Okay, third property is metals are conductors. Okay, metals allow the electricity to pass through them because they have sea of free electrons in them. Okay, आप अपने घरों में देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाती है. इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट एक कंडक्टर है. ठीक है, और मेटल्स कंडक्टर क्यों हैं? बिकॉज दे हैव सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम. हाउ? You can just have a look at the picture on the left side. There are positive charges, and around those positive charges the red dots are very prominent. So these red dots are basically the free electrons that are easy that have the ability to move from one place to another. As these electrons are free to move, so they can carry heat or electric current from one place to the another. Okay, so on the right side of the picture you can see there is a blurriness of red color. It means these electrons are moving very fast to conduct electricity or heat. So metals are conductors. The fourth property is metal form alloys. Alloy is again a new term for you. So alloy means alloy is a mixture of two or more metals or a mixture of metals with other elements. For example, stainless steel. अगर आप किसी मेटल को किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके एक न्यू कॉम्बिनेशन देते हो या मेटल को किसी भी दूसरी चीज के साथ मिक्स कर देते हो तो वो मिक्सचर कहलाता है एलॉय. फॉर एग्जांपल, आप अपने घरों में जो कटलरी यूज कर रहे हैं, जिस तरह स्पून्स हो गए, नाइफ्स हो गए, फॉक्स हो गए, दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील. सो स्टेनलेस स्टील इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स जो कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देती है. ओके, सो हियर आर सम ऑफ द एलॉयज दैट are being used in our daily life. For example, steel, that is the combination of iron and carbon. Okay, so you can see in the picture there are variety of elements that are made from steel in our daily life: scissors, keys, frying pans, chains, pins, utensils. And second is bronze, that is a combination of copper and tin. Okay, so here are the picture of different elements that are made with bronze. For example, coins, medals, and then third one is brass, that is mixture of copper and zinc. Both are metals. And basically the musical instruments and stopwatches and the instruments that are being used in the physics lab are made with the help of brass. So these were some common types of alloys that are being used in our daily life. So these were all the properties of metals that give them their unique characters. So this was all about today's topic. If you have any query or any type of question related to the topic, you are very free to ask to me. You can contact me to clear out your confusions. Till then, thank you so much, and Allah Hafiz.